Good morning, dear students. Today we'll discuss about the anatomy of the tongue. Clinically and एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. It is voluntary muscular structure occupied floor of the mouth. It is present floor of the mouth. Its length is approximately 3 inches. Its superior surface consists of the stratified squamous epithelium with numerous papillae. Contains sensory receptors for the sense of taste in the taste bud. Part of the tongue can be divided for study purposes into 3 parts. Root, body, this is root, body and apex. Root located between hyoid bone and mandible. Root lies between hyoid bone and mandible. Here lies root. And dorsal portion sits in the oropharynx. This lies in the oropharynx and attached to the tongue to the roof of the mouth. Now body. This part is body. This part is body. It is makes up the anterior tooth of the tongue. Rough surface due to the lingual papilla. And it is surrounded by anterior and lateral teeth. So, and at the anterior side and lateral side, there is teeth and mobile portion of the body is mobile portion of the tongue. It has apex. You can see this is apex. Apex, also known as a tip, rests past the incisor teeth. It rests against the incisor teeth. This apex lies against the incisor teeth and is highly mobile. So apex is highly mobile part. So you have seen that it has 3 parts. It has a root, body and apex. Here you can see this is apex, this is body, this is the root. And if you see the surface of the tongue, there are 2 surfaces, superior surface and inferior surface. In this diagram, you can see this is superior surface, dorsal surface or superior surface of the tongue. This surface can be divided. This surface has a V-shaped line known as terminal sulcus. Here you can see this is position of the foramen cecum, this point, and here V-shaped sulcus. This is terminal sulcus. By this sulcus, the dorsum of the tongue is divided into anterior part. This is anterior part and this is posterior part. This anterior part is made up of the body and apex. It has body and apex. From here, this is body and apex, is the anterior part. And posterior part, from here to here, it is made up of entirely root. Posterior part is made up of the root. Now, inferior surface. You can see this is inferior surface of the tongue or underside. It is also made up of the body and apex. So, this inferior surface, if you see, this part is body and this is apex. The thin strip, this is inferior surface. A thin strip tissue that runs vertically from floor of the mouth to under surface of the tongue is called lingual frenulum. Here you can see this is mucus fold. This is frenulum lingui. This is present on ventral side. Vertical fold, strip of tissue. This is frenulum. This is frenulum.
You can see this is frenulum. Frenulum lingui or lingual frenulum. It tends to limit the movement of the tongue. On either side to this frenulum, there is a prominence produced by deep lingual veins. Here is deep lingual vein. If you see, this is deep lingual vein. Here lies deep lingual vein. This is deep lingual vein. More lateral to there, lateral to this deep lingual vein, here there is fold of the mucosa or mucous lining, fold here. This is plica fimbriata. This is plica fimbriata. So you have seen on ventral side frenulum lingui. This is a frenulum. Lateral to this, this is lingual vein, and lateral to this there is the plica fimbriae. Plica fimbriae. So lateral most plica fimbriae. Now muscles of the tongue. Tongue is made up of intrinsic muscle and extrinsic muscle. There are 4 intrinsic muscle and 4 extrinsic muscle. 4 pairs of the extrinsic and 4 pairs of the intrinsic muscle. And a median fibrous septum divides the tongue into right and left half. And each half contains 4 intrinsic and 4 extrinsic muscles. So intrinsic muscles are the superior longitudinal muscle, inferior longitudinal muscle, transverse muscle, vertical. And here, these are the 4 extrinsic muscles. These are the genioglossus, hyoglossus, styloglossus, palatoglossus. Here you can see this is here is intrinsic muscle, superior longitudinal, vertical, transverse. Here is inferior longitudinal. Here is median septum. This is fibrous septum. It divides the tongue into right and left half. And on each side you can see this is intrinsic muscle here on one side, and this side it shows extrinsic muscle. So here is extrinsic muscle, palatoglossus, styloglossus, hyoglossus, genioglossus. Now discuss detail of these muscles. First of all, intrinsic muscles. Intrinsic muscles occupy upper part of the tongue and attach to the submucous fibrous layer and to median fibrous septum. So it alters the shape of the tongue. As per requirement, it alters the shape of the tongue. And the muscles are, as you know, superior longitudinal, inferior, transverse, and vertical. Here you can see superior longitudinal muscle. This is superior longitudinal muscle. This is superior longitudinal muscle. These muscles are longitudinally arranged near the superior surface, beneath the mucous membrane. It shortens the tongue. If this muscle contracts, then tongue become concave dorsally. Upper surface become concave. Here is inferior longitudinal muscle. This is inferior longitudinal muscle. It lies close to inferior surface of the tongue between genioglossus and hyoglossus. Between genioglossus and hyoglossus, it shortens the tongue, makes its dorsum convex. So, if this muscle, inferior longitudinal muscle, contracts, then this portion becomes elevated. So, the dorsum becomes convex.
So this is inferior, so superior longitudinal, inferior longitudinal. These muscles are longitudinally arranged. One lies near the superior surface and another lies near the inferior surface. Transverse. It extends from median septum to the margin. Transverse from median septum to margin. They are transversely arranged here. Make the tongue narrow and elongated. If this muscle contracts, then tongue become narrow and elongated. The verticals found at the borders of the anterior part of the tongue, it makes tongue broad and flatter. If this muscle contract, vertical, we are vertically arranged. If this contract, then tongue becomes flat and broad. Now we'll discuss about the extrinsic muscle. There are four numbers. They are genioglossus, hyoglossus, palaetoglossus, and styloglossus. These muscles, as their name suggests, इनके नाम से ही लगता है कि ये दो जगह जुड़ी है. Genio means genial tubercle, glossus tongue. Hyoglossus, hyoid bone, tongue. Palaetoglossus, palate, tongue. Styloglossus, styloid process, tongue. So here you can see this muscle from here to this is genioglossus, from superior genial tubercle, genioglossus. ऐसे देखें posterior ये styloglossus, ऊपर palate है palaetoglossus और नीचे head bone है hyoglossus. So these muscles, four muscles are present. We'll discuss detail one by one. This is genioglossus. Here you can see here is superior genial tubercle present on the inner surface of the inferior part of the mandible. So here is superior genial tubercle. So it's upper genial tubercle of the mandible which runs backward. It takes origin from here. It runs backward. This fan shape, you can see. Upper fibers goes to attach the tip and it retracts tip. Middle fibers go here and attach the dorsum of the tongue and it depresses the tongue. And lower fibers, here the lower fibers goes to the hyoid bone and it pulls posterior part of the tongue and forward and protrude out. So if this muscle contracts, this part contracts, the tongue protrudes forward. Here you can see this genioglossus muscle is a safety muscle of the tongue. Genioglossus को safety muscle of the tongue कहते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर देखिए जेनियल ट्यूबल्स का इसको काट कर दिया जाए, यहाँ से काट दिया जाए तो ये क्या करेगा, पीछे का पीछे आएगा पूरा ये फाइल्स को और फाइल्स को ब्लॉक कर देगा. अगर यहाँ से इसको कट कर दिया जेनियल ट्यूबल्स से यहाँ से तो ये पूरा का पूरा ये इसमें फॉल कर जाएगा, गिर जाएगा, पीछे जाएगा और पीछे जा गया तो यहाँ ये पैसेज को ब्लॉक कर देगा. So it blocks, here you can see this blocks the airway. That's why genioglossus is known as safety muscle of the tongue. Another muscle is hyoglossus. It takes origin from the hyoid bone. This is hyoid bone. Whole length of the greater carnua and lateral part of the body of hyoid, greater carnum and body of the hyoid. Fibers runs upward and forward and inserted on the side of the tongue between styloglossus, ये है styloglossus, between styloglossus and inferior longitudinal muscle, इन दोनों के बीच में जाकर इंसर्ट कर रहा है. Action, which is contact, it depresses the tongue, makes dorsum concave and retract and protrude tongue.
So this is axon. Here you can see this axon, the hyoglossus. This is hyoglossus. This is hyoglossus. Now paletoglossus. This is palate. In this diagram, you can see this is palate. This is hard palate and posterior is soft palate. ये palate की muscles है. The palate से attached paletoglossus. Muscle tongue attached is palate. This is paletoglossus. Paletoglossus arch बना रहे. This is paletoglossus muscle. It is takes origin from oral surface of palatine aponeurosis. इसी पैलेट में पैलेटाइन एपोनेलोसिस से जिससे ओरिजिन ले रहा है पैलेटोग्लॉसस. यहाँ से ये लेटर साइड में देखिए आ रहा है, ये टंग में मर्ज हो रहा है. डिसेंड इन द पैलेटोग्लॉसल आर्च टू साइड ऑफ जंक्शन एट जंक्शन ऑफ द ओरल एंड फैरिंजियल पार्ट. और इसी से ओरल, इसके आगे ओरल पार्ट है, इसके आगे फैरिंजियल पार्ट है. ये है पैलेटोग्लॉसस मसल. एक्शन, इट पुल्स अप द रूट ऑफ द टंग. द रूट ऑफ द टंग इट पुल्स upward, the root of the tongue, and approximate the paletoglossus arch, and just close the oropharyngeal stomach. Create contact, close the oropharyngeal stomach. Here, this is palate, this is paletoglossus. This is paletoglossus. This is palate, paletoglossus. Here is palate, paletoglossus. This paletoglossus superior attaches the palate. Now styloglossus. Posteriorly you can see this is styloid process. ये आप नार्मा बेसिलिस में आप देखेंगे होंगे, नार्मा लैटेरिस से भी दिखता है. styloid process. ये है. It shortens, it is the shortest and smallest of the tongue muscle, extensive muscle. It takes origin from styloid process of the temporal bone. Takes origin from styloid process inserted in the tip and side of the tongue. It goes from here to here. It is inserted in the tip and side of the tongue. This is styloglossus. It takes origin from styloid process and attaches the tongue, side of the tongue and tip of the tongue. Its action is retract and elevation of the tongue. ये retract करेगा, खींचेगा, ना अगर कांटेक्ट करता है तो इसको पुल करेगा पीछे, है ना, और elevate the tongue. This is styloid process. Styloglossus. Styloglossus. This is styloglossus. The muscular supply of the tongue. The branch of external carotid artery passing deep to the hyoglossus muscle. Divides from dorsal lingual artery. Lingual artery. This artery is fascia, and here is position of the this artery is lingual artery. This is lingual artery. It gives dorsal lingual branch. Here dorsal lingual branch, deep lingual artery. This is deep lingual artery, and sublingual. And generally, it gives branch sublingual artery. Venous drainage. Here you can see this is lingual artery, and here is accompanying vein. So venous drainage, dorsal lingual vein. This is dorsum and side of the tongue, dorsal lingual vein. Here is dorsal lingual vein. Deep lingual vein drains the tip of the tongue and joins the sublingual veins and forms from the sublingual salivary gland. So here lies the deep sublingual vein, and all these veins terminate directly or indirectly into internal jugular vein. Here is internal jugular vein, directly goes into the internal jugular vein. Innervation of the tongue. Tongue is supplied by
motor and sensory nerve. Here is motor nerve. Motor nerve. Here, this palatoglossus is supplied by vagus nerve, and all rest of the muscle of the tongue is supplied by hypoglossal nerve, 12th cranial nerve. So all the muscles of the tongue supplied by हाइपोग्लॉसल, चाहे इंट्रिंसिक हो चाहे एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं, सबकी सप्लाई कैसे हो रही है? हाइपोग्लॉसल, 12th cranial nerve, एक्सेप्ट वन. कौन सी है? दैट इज पैलेटोग्लॉसस, जो ऊपर से आ रही है, पैल से आ रही है, पैलेटोग्लॉसस. वहां पर वेगो एसेसरी कॉम्प्लेक्स बनता है, वेगस नर्व से सप्लाई है. तो एक मसल वेगस से, बाकी 7 मसल, 4 इंट्रिंसिक एंड 3 एक्सट्रिंसिक, सप्लाइड बाय हाइपोग्लॉसल. तो मसल की सप्लाई समझ में आ गई कि हाइपोग्लॉसल नर्व मेन है, 7 मसल को सप्लाई कर रही, एक मसल को पैलेटोग्लॉसस की सप्लाई करता है वेगस. अब सेंसरी सप्लाई. सेंसरी सप्लाई बहुत बड़े. ये देखिए, ये यहाँ पर वी शेप मैंने सल्कस डाल दी, वी शेप सल्कस यहाँ है, फोरामेन सीकम. एंटीरियर पार्ट इज एंटीरियर 2/3 and posterior 1/3, and this is posterior most part. So anterior 2/3 की सेंसरी सप्लाई देखें पर जनरल सेंसेशन, जनरल सेंसेशन के लिए सप्लाई है टू लिंगुअल नर्व. इट इज ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व. इसकी सप्लाई हो रही है एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग. नर्व सप्लाई को जब हम ध्यान देखें, ध्यान से समझेंगे, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे. एंटीरियर 2/3, ये है जो वी शेप सल्कस है, सल्कस टर्मिनलिस. इसके आगे का पार्ट एंटीरियर 2/3 है. ये है पोस्टीरियर 1/3 और ये है पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट. 3 पार्ट में डिवाइड किया. अगर हम सेंसरी सप्लाई की बात करें, जनरल सेंसरी की बात करते हैं, तो लिंगुअल नर्व, anterior 2/3 of the tongue supplied by lingual nerve, this branch of mandibular nerve, posterior division of the mandibular nerve. हाँ, यहाँ से टेस्ट सेंसेशन, एक तो जनरल सेंसेशन है, दूसरा टेस्ट सेंसेशन. स्पेशल सेंसरी, स्पेशल सेंसरी, दिस स्पेशल सेंसरी supplied by carda tympani, which is branch of the facial nerve. This is very important. एंटीरियर 2/3 की नर्व सप्लाई हो रही है, ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, दैट इज कार्डा टिम्पनाई. दिस कार्डा टिम्पनाई फॉर द स्पेशल सेंसरी एंड फॉर जनरल सेंसेशन लिंगुअल नर्व. तो एंटीरियर 2/3 की 2 सप्लाई है, जनरल सेंसरी लिंगुअल नर्व एंड स्पेशल सेंसरी बाय कार्डा टिम्पनाई. लिंगुअल नर्व ब्रांच है मैंडिबुलर की और कार्डा टिम्पनाई ब्रांच है फेशियल. तो ये एंटीरियर 2/3. अब ये पोस्टीरियर 1/3. पोस्टीरियर 1/3 में एक अच्छी बात है, यहाँ ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व गिव सप्लाई टू जनरल सेंसेशन एंड स्पेशल सेंसेशन, जनरल एंड स्पेशल सेंसेशन. एंड posterior most part, here posterior most part is supplied by internal laryngeal nerve. Internal laryngeal nerve is a branch of vagus nerve. So this is nerve supply of the tongue. Now lymphatic drainage of the tongue. This is tip of the tongue. From tip, lymphatics goes to submental lymph node. यहाँ पर टिप होगी, टिप से सबमेंटल लिम्फ नोड. ये सबमेंटल लिम्फ. रिमेनिंग पार्ट
Anterior right and left two-third drains directly to the submandibular. बाकी पार्ट से anterior two-third देखिए तो आइए ये submandibular gland में है. Few central lymphatics drain bilaterally to the same node. यहाँ जो central lymphatics होंगे ये दोनों साइड में भी ड्रेन करते हैं. लेटरल पार्ट वाले सेम साइड में गए, लेकिन जो सेंट्रल पार्ट है का वहां के लिम्फेटिक अपोजिट साइड में भी जा सकते हैं. पोस्टीरियर वन थर्ड ड्रेन्स बायलेटरली टू जुगुलो ओमोहाइड. पोस्टीरियर वन थर्ड को देखिए ये आ रही है जुगुलो ओमोहाइड लिम्फ. यहाँ ओमोहाइड मसल एंड इंटरनल जुगुलर वेन है. यहाँ इस पॉइंट पर जुगुलो ओमोहाइड लिम्फ नोड है. और अल्टीमेटली देखिए सारे सबमेंटल, सबलिंगुअल, सबमेंटल एंड सबमैंडिबुलर ये भी ड्रेन कर रहे हैं जुगुलो ओमोहाइड में. इसीलिए लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द टंग में याद रखिए इसका मेन लिम्फ नोड कौन सा है. अल्टीमेटली जहां लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है सभी पार्ट का वो है जुगुलो ओमोहाइड लिम्फ. जुगुलो ओमोहाइड लिम्फ नोड इज आल्सो नोन एज लिम्फ नोड ऑफ द टंग. Now, one gland. There are three types of the gland present in the tongue. कौन कौन से हैं? Glands of Blandin-Luhan. Gland of Blandin-Luhan. ये gland है, ये है anterior lingual gland. ये है gland of Luhan, Blandin-Luhan या anterior lingual gland. This is called as apical gland. It is all deeply placed and it is zero-mucus type gland and located near the tip of the tongue on each side of the frenulum linguae. Frenulum linguae के दोनों साइड में टंग टिप के पास में होती है, tip of the tongue के पास. This is apical. They are found on the under surface of the apex of the tongue and are covered by a bundle of muscular fibers derived from the styloglossus and longitudinal, inferior longitudinal. स्टाइलोग्लॉसस और inferior longitudinal के पास में ये यहाँ पर जो मसल बंडल है इससे कवर्ड होती हैं. दे आर बिटवीन 12 to 25 millimeter in length and approximately 8 millimeter wide, and each opens by 3 or 4 ducts on under surface of the tongue's apex. तो ये टिप के पास में खुलता है अंडर सरफेस पर, नीचे की सरफेस पर. दिस इज ग्लैंड ऑफ लूहन यानी USN. ग्लैंड ऑफ Blandin-Luhan, ग्लैंड ऑफ Blandin-Luhan और anterior lingual gland or apical gland. Another gland is gland of von Ebner. Here you can see this is von Ebner gland. Here is von Ebner gland. They are serous gland located adjacent to the modes surrounding the circumvallate and foliate papilla. Here यहाँ पर देखिए ये है circumvallate papilla, ये circumvallate की ये जो मोड्स हैं जिसमें गड्ढे हैं, खाई है, इसमें ये डक्ट ओपन करती है. ये ग्लैंड है, ये डक्ट यहाँ पर. von Ebner gland secretes lingual lipase secrete करती है. von Ebner secretes lingual lipase. This secretion flushes material from the modes to enable the taste bud to respond rapidly to changing stimuli. तो यहाँ से ये यहाँ से आ रहा secretion जिसमें है lingual lipase, और यहाँ जो खाने का मटेरियल यहाँ पर होगा ये इसको जल्दी से यहाँ फ्लश कर देगा, ये यहाँ से निकल के चला जाएगा. Von Ebner glands are innervated by cranial nerve, 9th cranial nerve, the glossopharyngeal. Now glands of Beavers. दूसरी ग्लैंड है ग्लैंड ऑफ Beavers. They lie along the lateral border of the tongue. These glands are pure mucus secreting. अभी आपने देखा सीरस ये म्यूकस secreting है. Beavers gland ये lateral border पर होगी, टंग के lateral border पर. It opens into the crypts of the lingual tonsil on the posterior dorsum.
An abscess formed due to the accumulation of the pus fluid in this gland is called peritonsil abscess. Now, function of the tongue. It is a function that the mastication, it helps in the mastication, खाने को चबाने में मदद करता है, डिग्रेडेशन निगलने में मदद करता है, स्पीच बोलने में मदद कर रहा है, या टेस्ट सेंसेशन, जब आप खाना खा रहे हैं स्वादिष्ट उसका टेस्ट यही होता है. Now, development of the tongue. It starts to develop near the end of fourth week. Fourth week के आसपास का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है. और इसमें एपिथेलियल लाइनिंग अगर देखें, एपिथेलियम का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है. एंटीरियर 2/3 from 2 lingual swellings and 1 tuberculum impart from the first branchial arch. तो फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च में आपने ब्रैंकियल आर्च पहले पढ़ लिया है, कितने ब्रैंकियल आर्च होते हैं. इनिशियली देयर आर 6 ब्रैंकियल आर्च और फिफ्थ डीजनरेट हो जाता है, इसलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ देयर आर 5 ब्रैंकियल आर्चेस आर प्रेजेंट इन द क्रेनियल पार्ट ऑफ द डेवलपिंग फोरगट. तो ये डेवलपिंग फोरगट में होते हैं. तो इसमें जो फर्स्ट आर्च है, फर्स्ट आर्च की नर्व कौन सी है? मैंडिबुलर नर्व. नर्व ऑफ द फर्स्ट आर्च इज मैंडिबुलर. सेकंड आर्च की नर्व कौन सी है? फेशियल नर्व. तो अभी नर्व सप्लाई भी इससे हम क्लियर कर देंगे. तो फ्रॉम एंटीरियर 2/3 develops from 2 lingual swelling and 1 tubercular impart from the first branchial arch. ये दोनों फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च से हैं, इसलिए एंटीरियर 2/3 की सेंसरी सप्लाई किससे होती है? लिंगुअल नर्व. लिंगुअल नर्व इज ए ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व. फर्स्ट आर्च की नर्व कौन सी है? मैंडिबुलर नर्व है, इसलिए एंटीरियर 2/3 इज सप्लाइड बाय मैंडिबुलर नर्व. एक चीज और है, एंटीरियर 2/3 में सप्लाइड बाय लिंगुअल नर्व. लिंगुअल नर्व कहां से आती है? इट इज पोस्ट ट्रिमेटिक ब्रांच. ये लिंगुअल नर्व, ये फेशियल की ब्रांच है, ये भी आके इसको सप्लाई करती है. इसीलिए जो सेंसरी सप्लाई है कार्डा टिम्पराई, तो इसमें लिंगुअल नर्व पोस्ट ट्रिमेटिक होती है, इसमें प्री ट्रिमेटिक नर्व आके मिल जाती है. लिंगुअल नर्व में आकर के एक नर्व और मिल जा रही है, दैट इज प्री ट्रिमेटिक कार्डा टिम्पराई. इसीलिए फर्स्ट आर्च की जो टंग डेवलप हो रहा है, इसकी डुअल नर्व सप्लाई है. सेंसरी सप्लाई बाय लिंगुअल नर्व, ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व, एंड स्पेशल टेस्ट सेंसरी सप्लाई बाय प्री-ट्रिमेटिक nerve, that is cardia tympani, the branch of facial nerve, and posterior 1/3 from the cranial half of the hypobranchial eminence and nerve from the third arch. थर्ड आर्च की नर्व है ग्लासोफेरिंजियल, तो इसलिए पोस्टीरियर 1/3 किससे डेवलप हो रहा है? थर्ड आर्च से, और इसीलिए इसकी नर्व सप्लाई है ग्लासोफेरिंजियल, सप्लाइड बाय ग्लासोफेरिंजियल नर्व. पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट फ्रॉम द फोर्थ आर्च, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट डेवलप होता है फोर्थ आर्च, इसलिए इसकी नर्व सप्लाई है वेगस. फोर्थ आर्च की नर्व सप्लाई है वेगस. तो ये है लाइनिंग एपिथेलियम. आपने देखा. नाउ we'll discuss about muscle and connective tissue. Muscle कहाँ डेवलप हो रही है? Muscle develops from occipital myotome, which is supplied by hypoglossal nerve, and connective tissue develops from the local mesenchyme. So, local mesenchyme are the side of the developing tongue form the connective tissue. Here you can see the anterior two-thirds of the tongue develops from 2 lingual swelling and tuberculum parts. Anterior two-thirds, here you can see there are 2 lingual swellings and tuberculum part. ये lingual swelling ऐसे देखिए ये बढ़ाते रहेंगे, और ये देखिए यहाँ पर ये थर्ड आर्च की, ये बीच में फोराmen cecum आ गया, ये थर्ड आर्च की. posterior 1/3 are developed from the hypobranchial eminence. hypobranchial eminence ये है थर्ड आर्च, ये है hypobranchial eminence. Now papilla of the tongue. Papilla are 4 types: filiform, fungiform, foliate and circumvallate. filiform कहाँ पर है? जैसे filiform is minute conical, ये देखिए कोन जैसे जहां आपको दिख रहे हैं filiform है. conical projection covers the most of the pre-sulcal dorsal, ये है pre-sulcus, the dorsal part of the tongue. They increase the friction between the tongue and food. tongue और food के बीच में friction को बढ़ा देते हैं.
They bear many secondary papilla which are more pointed than those of the violet and fungiform papilla and covered with keratin. तो ये यहाँ से ये सेकेंडरी पेपिला भी इसमें निकलेंगे, ये कवर्ड है केराटिन से। फिलीफॉर्म पेपिला, यू कैन सी फिलीफॉर्म पेपिला। फिर फंजीफॉर्म पेपिला, ये देखिए फिलीफॉर्म, ये देखिए फंजीफॉर्म। फंजीफॉर्म ऐसे इट इज लोकेटेड मेनली ऑन द लिंगुअल मार्जिन, ये मार्जिन पर पाया जाएगा फंजीफॉर्म, ये लिंगुअल मार्जिन। डिफर फ्रॉम फिलीफॉर्म बिकॉज they are larger, rounded and deep red in color. Deep red in color. Here's one or more taste buds on its apical surface. These are mushroom shaped, more numerous near the tip and margin of the tongue, but some of them scattered over the dot. तो ये देखिए, ये मशरूम शेप्ड हैं, ये सबसे ज्यादा टिप पर होते हैं, मार्जिन ऑफ टंग, और बीच बीच में कहीं स्कैटर्ड हैं। तो ये हो गए फिलीफॉर्म, fungiform. Now foliate. Foliate are red leaf-like mucosal ridge. Here lies foliate. Here this is foliate, leaf-like. Bilaterally at the side of the tongue, near the sulcus terminalis, bears the numerous taste buds. इसमें taste buds भी हो गए, ये है foliate. Now circumvallate. Here you can see the circumvallate bacteria. Here is circumvallate. This is circumvallate. Circumvallate. This is 8 to 12 in number. Here you can see these are the 8 to 12 in number. Form a V-shaped row in front of the sulcus terminalis. Sulcus terminalis की ठीक आगे ये यहाँ पर row बना दे रहे हैं. On the dorsum of the tongue, the entire structure is covered with a squamous epithelium in both sulcal wall and taste buds around. Now taste buds. Present in relation to the सर्कम, देखिए ये है, ये टेस्ट बड। सर्कमवैलेट में देखिए टेस्ट बड कहाँ पर है, फोलिएट में कहाँ पर है, और फंजीफॉर्म में ये पोजीशन है। तो प्रेजेंट इन द रिलेशन टू द सर्कमवैलेट पैपिली, फंजीफॉर्म पैपिली एंड फोलिएट पैपिली, इन सबके रिलेशन में टेस्ट बड्स होते हैं। आल्सो प्रेजेंट ऑन द शाफ्ट, पैलेट, एपिग्लॉटिस, पैलेटोग्लॉसल आर्च एंड द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ओरोथाइडस। टेस्ट बड्स कहाँ नहीं मिले, ये फिलीफॉर्म में नहीं है, बाकी फंजीफॉर्म, फोलिएट, सर्कमवैलेट में है। नाउ न्यूरोएपिथेलियम। Now neuroepithelial taste cells are gustatory cells in taste, but here you can see this is taste buds. They are modified columnar elongated cells which act as receptor. Here you can see these are the elongated cells. Here nerve is connected with the elongated cells. These are the sensory cells. These are the main sensation. These are modified columnar elongated cells which act as receptor. These cells act as receptor. They have dark stained nucleus. यहाँ पर देखिए ये है dark stained nucleus. नीचे है nerve से connected है. And the superficial part of these cells is provided with short hair or hairlet microvilli. ऊपर देखिए ये है small microvilli present. These hairlets project into the taste pores. This is taste pore. ये यहाँ तक projected होंगे. The base of the taste cell is surrounded by sensory nerve fibers, carry the impulse of the taste sensation to the brain. ये देखिए यहाँ पर nerve से जुड़े हुई है, तो ये है sensory receptors. ये sensory receptors. Here you can see here the sensory receptors. And supporting cells. Supporting cells in the taste buds. Here you can see these are the sensory cells, receptors. Near to this, there are supporting cells. Supporting cells. This cell is supporting cell.
So this is supporting cell. Supporting cell, they are elongated columnar cell with a dark cytoplasm but lighted stain nuclei. They form the outer wall of the taste bud. They have long microvilli that extend to their surface into the taste pore. इसमें भी माइक्रोबिलाई है, ये टेस्ट पोर तक जा रही, ये सपोर्टिंग सेल्स हैं, ये नर्व सेल्स को, ये जो सेंसरी सेल्स हैं, इनको सपोर्ट कर रही हैं. Now basal cells, they are present on the base of the taste bud. Here you can see the small cells present in the base. This is the basal cells. They act as stem cell for renewal of the taste cells and supporting cells. तो ये बेस सेल्स होती हैं, ये डिवाइड करके दोनों तरह की सेल्स बना देती हैं. तो दिस इज बेसल सेल. ये है पूरा टेस्ट बड. नाउ टेस्ट डिस्क्रिमिनेशन. टंग में कहाँ कहाँ कौन सा पार्ट है जो टेस्ट को बताता है. ये यू कैन सी टिप पर देखिए, स्वीट साइड में, anteriorly salty, posteriorly sour, and posteriormost part, this is bitter. So gustatory receptor detects four main types of the taste: sweet on the tip, sour on the middle, here, salty on anterolateral, bitter on the base. However, recent evidence indicates that all areas of the tongue are responsive to all taste stimuli. Now applied aspect of the tongue. Here you can see enchyloglossa, a tongue tie. This frenulum lingui, it connects the tongue with the floor of the mouth. It is not dissolved, it is not separated. It connects the tongue with the floor of the mouth. So this is tongue tie. Here, this is tongue tie. Here under, this is tongue tie or enchyloglossa. It limits the movement of the tongue. Now developmental analysis tongue. It is incomplete separation of the tongue from the floor of the mouth. Movement of tongue is restricted. Here you can see. Okay. Tongue tie. Now bifidus tongue. Here, failure of fusion of the two lingual swellings. Here, two lingual swellings do not fuse for the bifidus tongue. Microglossia or hypoglossia, underdeveloped, uncommon developmental condition, unknown origin, characterized by abnormal small tongue. Entire tongue may be missing, aglossia, and length of the mandibular arch will be smaller due to the smaller size of the tongue. So here, the tongue is very small. Microglossia, tongue is very large, and fissured or plicated or scrotal tongue. This you can see scrotal tongue are the fissured tongue. Here lingual thyroid. Lingual thyroid, here thyroid, some part of the thyroid tissue is present in the tongue. So lingual thyroid. Squamous cell carcinoma. This is carcinoma of the tongue. Here is the side of the tongue. This is squamous cell carcinoma of the tongue. Thank you. So this is all about the development of the tongue, developmental anomalies of the tongue, and gross anatomy of the tongue. Gross anatomy में आपने देखा कि इसके muscles 8 muscles होती हैं, 4 intrinsic and 4 extrinsic muscles, और जो सबसे important part है इसकी nerve supply, lymphatic drainage, arterial supply, venous drainage. So nerve supply, muscles are supplied by, all muscles are supplied by hypoglossal except one, that is palaetoglossal. Palaetoglossal is supplied by vagus. Sensory supply, anterior 2/3, general sensation by lingual nerve, and special taste sensation by cauda tympani, and posterior
1/3 part is by glossopharyngeal nerve. Here glossopharyngeal nerve is supplied with general sensation and questions in both, and posterior most part is supplied by internal laryngeal nerve, is a branch of vagus nerve. So thank you.